Starting with the name of Almighty Allah, who is most kind and most merciful. Dear student, as you know that in last English class we had studied before and after. So next grammatical point is but. So what is but? But जो है ये क्या है और ये हम किस पर्पस के लिए यूज करते हैं? So I am going to write down the definition. After that, you will easily understand it, inshallah. So I wrote the definition on the board of but. But जो है ये क्या है? But is a conjunction. But जो है ये क्या है? ये conjunction है. It is used to join two opposite sentences. और but जो है ये हम यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं ताकि हम क्या करें? ताकि हम दो अपोजिट जुमलों को, दो मुतजाद जुमलों को आपस में क्या करें? आपस में ज्वाइन करें, आपस में मिलाए. ठीक है. मिसाल के तौर पर दो मुतजाद अल्फाज है पुअर एंड रिच. पुअर और रिच जो है, मालदार और गरीब, ये जो है ये अपोजिट अल्फाज है. ठीक है. नेक्स्ट एग्जांपल टाल और स्मॉल, ये टू अपोजिट वर्ड्स है. ठीक है. अनदर एग्जांपल मिसाल के तौर पर हॉट और कोल्ड. तो इस तरह के अल्फाज को या इस टाइप के सेंटेंसेस को जिसमें ये मुतजाद अल्फाज आए हुए हो, ठीक है, तो उसको ज्वाइन करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? उसको ज्वाइन करने के लिए हम यूज करते हैं बट को. ठीक है. मिसाल के तौर पर Ahmad is tall but Ali is small. तो स्मॉल और tall जो है ये दो अपोजिट वर्ड्स है. ठीक है. दो अपोजिट अल्फाज है. तो इसको ज्वाइन करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? इसको ज्वाइन करने के लिए हम यूज करते हैं बट को. ठीक है. मिसाल के तौर पर ये एक सेंटेंस है, अहमद इज टॉल और अली इज स्मॉल. ये दो सेंटेंसेस है. तो इसको ज्वाइन करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? इसको ज्वाइन करने के लिए हम यूज करेंगे बट को. ठीक है. एंड इट इज आल्सो बी कीप्ड इन माइंड दैट वी यूज अ कामा बिफोर बट. बट से पहले हम क्या यूज करेंगे? बट से पहले हम जो है कामा यूज करेंगे. अहमद इज टॉल बट अली इज स्मॉल. अहमद जो है वो लंबा है लेकिन, बट मींस लेकिन अली जो है वो क्या है? वो छोटा है. अनदर एग्जांपल नाइला इज रिच, लेला इज पुअर. नाइला जो है वो मालदार है और लेला जो है वो गरीब है. तो इन दो अपोजिट सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? बट को. नाइला इज रिच, नाइला जो है वो मालदार है, बट लेला इज पुअर, लेकिन लेला जो है वो क्या है? वो गरीब है. अनदर एग्जांपल Summer is hot. Summer is hot. Winter is cold. तो ये दो मुतजाद जुमले हैं. इसको ज्वाइन करने के लिए हम यूज करते हैं क्या? बट को. ठीक है. Summer is hot, but winter is cold. और ये भी आप जहन में रख दीजिए, ठीक है, कि but can also be used as a preposition. बट जो है हम एज प्रीपोजिशन भी क्या करते हैं? यूज करते हैं. बट विन
but is used as a preposition, then it is followed by a noun. जब भी हम but को as a preposition यूज करेंगे तो उस but के बाद ऑटोमेटिकली क्या आएगा? ऑटोमेटिकली नाउन आएगा, ठीक है। और उस but की फिर मीनिंग होगी, मानी होगी, मतलब होगी क्या? विदाउट और एक्सेप्ट। मिसाल के तौर पर सो but is a preposition, ठीक है, as a preposition। तो अब हम इन एग्जाम्पल्स में but यूज करते हैं as a preposition। मिसाल के तौर पर she has all the books, she has all the books but English, she has all the books but English। So here this is what? This is but, and but is here used as a preposition, and after but there is what? There is noun, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को definition में कहा, ठीक है, कि but can also be used as a preposition, but हम as a preposition यूज करते हैं। जब भी हम but as a preposition यूज करेंगे तो उसके फौरन बाद क्या आएगा? noun आएगा, ठीक है। और उस but का मतलब होगा क्या? without or except। For example, she has all the books but English। This example means she has all the books without English or except English। English के अलावा उसके पास जो है सब की सब किताबें हैं, ठीक है। Another example, he eats everything, he eats everything but rice। he eats everything, वो हर चीज को खाता है, ठीक है, but rice means except rice or without rice। he eats everything but rice। This example means he eats everything but rice, but here means what? except rice or without rice। चावल के अलावा वो हर चीज को क्या करता है? खाता है, ठीक है। Another example, I like coffee, I like coffee but sugar, but sugar। This example means I like coffee but sugar means what? without sugar or except sugar, ठीक है। मुझे काफी जो है वो पसंद है लेकिन शुगर के अलावा, ठीक है। So here but gives the meaning of what? except or without। Another example, for example, all the students were present, all the students were present but Ali। This example means that all the students were present in the class but Ali, without Ali or except Ali means Ali was what? Ali was absent। So it was what? It was a grammatical point but। So but क्या है? but जो है ये एक कंजंक्शन है और ये हम यूज करते हैं टू अपोजिट सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए। इसके ऊपर हमने प्रॉपर एग्जांपल भी लिख दिए, ठीक है। और but can also be used as a preposition, ये भी हमने पढ़ा कि but जो है हम as a preposition भी यूज करते हैं। जब भी हम but को as a preposition यूज करेंगे तो उसके फौरन बाद क्या आएगा? नाउन आएगा। जिस तरह इस सेंटेंस में इंग्लिश आया है, इसमें राइस आया है, इसमें शुगर आया है और इसमें अली आया है, ठीक है। और इस but का फिर मानी क्या होगा? इसकी मानी होगी क्या? without or except, ठीक है। So we studied but as a conjunction and but as a preposition, ठीक है। So I hope you will easily understand it, inshallah। And if you have not subscribed our channel, please like and subscribe our channel for more videos। Thank you।